सो गाइस वेलकम बैक टू लीगल विद्या। और आज हम लोग एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है फॉर्मुलेट हुआ था। आई एम नॉट सेइंग कि पहली बार आया था बट फॉर्मुलेट हुआ था। एंड ये जो एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू नॉट जस्ट थ्रू आउट योर लॉ स्कूल बट इवन आफ्टर दैट। द केसेस केशवानंदा भारती श्रीपदगलवारू एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर। अगर आपको इस केस के रिटन स्टेटमेंट्स चाहिए तो काइंडली विजिट legalvidya.com जहाँ पे हमने ये अपडेट किया है। So the citation to this is AIR 1973 SC 1461. The date of judgment is April 24, 1973. The case was a writ petition of a civil nature, and there were total 13 justices, and the judgment was of 7:6 ratio. So coming to the facts of the case, the facts were that जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला है उन्होंने द लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1969 एनेक्ट किया था, जिसके द्वारा गवर्नमेंट को पावर मिल गई थी टू एक्वायर सम लैंड ओन्ड बाय एडनीर मठ, which to which the leader was Keshavananda Bharti at that time. March 21, 1970 पे केशवानंदा भारती ने रिट पिटीशन फाइल करी इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 which gives a person the right to constitutional remedies, and he did this to enforce his right guaranteed by article 25. तो कुछ स्पेशल राइट्स जिसकी बात हुई थी इस केस में वर आर्टिकल 25, दैट इज द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, आर्टिकल 26 द राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 14 द right to equality, article 19 clause 1 subclause f that is the freedom to acquire property, and article 31 that is the compulsory acquisition of property, which though now is repealed was a question during that time. The issues were basically two, that is the constitutional validity of the 24th and 25th Constitutional Amendment Act of 1971 and 1972 respectively. And the second and the most important question was to what extent the parliament can exercise its power to amend the constitution. तो जो कंटेंशन थे पिटिशनर के वो ये थे कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर होती है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये जो पावर है इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एन आर्बिट्रेरी और एन अनरिस्ट्रेन्ड वे। वहीं पे इन्होंने ये भी बोला था कि 24 और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है दे आर वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने काफ़ी रेफरेंस प्लेस की थी ऑन द स्टेटमेंट गिवन बाय जस्टिस मुधोलकर एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय मॉडिफाइंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। जिस सो बेसिकली सज्जन सिंह के केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी गई थी, एंड इट सेट कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी अमेंडिंग पावर अंडर 368 यूज़ करे, बट इस वे में ना करे कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ही ख़त्म हो जाए। वहीं पे जो रिस्पोंडेंट्स थे दैट इज़ द स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर, उनका बस यही कहना था कि दे रिलाई ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम नेमली द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा पावरफुल है द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट के पास एंडलेस पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। Ratio decidendi of the case, the judgment was in a 7:6 ratio, जहाँ पे जो majority view था it consisted of Chief Justice S.M. Sikri, Justice J.M. Sehla, Justice K.S. Hegde, Justice A.N. Grover, Justice Jagmohan Reddy, and Justice Hansraj Khanna and Justice B.K. Mukherjee. इन्होंने ये बोला the power to amend does not include the power to change the basic structure of the constitution to the point of altering its identity. This proposition will be used to determine the legitimacy of constitutional amendment, और जो minority view था which included Justice Y.V. Chandrachud, Justice A.N. Ray, Justice D.G. Palekar, Justice K.K. Matthews, Justice M.H. Beg, and Justice S.N. Dwivedi, they said the power to amend under Article 368 is plenary. That is, it has no implicit or explicit inherent limits and includes the ability to introduce, change, or repeal various articles of the Constitution except those relating to fundamental rights. तो मेजॉरिटी व्यू ने तो बेसिकली यही बोला कि अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट के पास, बट अमेंड इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के, और कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को ही ऑल्टर कर दिया जाए। और ये जो टेस्ट है इट वाज लेटर यूज्ड टू डिटरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो माइनॉरिटी व्यू है इन्होंने ये बोला कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है आर्टिकल 368 के अंदर, दैट इज़ द
अमेंडमेंट पावर ऑफ अमेंडमेंट आर्टिकल 368 एंड पार्लियामेंट कोई भी नया लॉ इंट्रोड्यूस कर सकती है, चेंज कर सकती है, रिपील कर सकती है, अमेंड कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को हम नहीं पहुंचना चाहिए. जजमेंट तो 13 जजेस थे टोटल एंड 7:6 का जजमेंट था विच हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू अमेंड एनी क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as long as the amendment does not violate the basic structure of constitution. Then the Indian constitution can be amended by parliament in order to fulfill its socio-economic obligations that were guaranteed to the citizens as given in the preamble, provided that such amendment did not change the constitution's basic structure. Minority का opinion however थोड़ा अलग था. The court in the case upheld the 24th constitutional amendment and इन्होंने बोला कि ये जो amendment है 24th वाला ये completely valid है. लेकिन on the other hand जो 25th amendment था उसका first part was intra virus and the second part was ultra virus. Supreme Court has the authority to corrode the basic structure of the constitution, nor can it withdraw the mandate to create a welfare state and fair society. Basic structure doctrine was thus formulated in Keshavananda Bharti case. It was not first found out or found, but it was formulated in the case, and it implied that although the parliament has the authority to amend the entire constitution, they must do so in a way that does not contradict the features of so fundamental to the constitution that it would be spiritless without them. Up conclusion. It was a 700-page judgment and it was 7:6 ratio जिसमें इसका जजमेंट आया था. 7 were in majority and 6 were in minority. सो जिसमें ये कहा गया पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस वे में नहीं अमेंड करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिटलेस हो जाए. द केशवानंद भारती डिसीजन फॉर्म्स द मोस्ट पावरफुल एंड बाइंडिंग प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी ऑल नो एज टुडे. एंड ये जो केस है इट वाज सो इम्पैक्टफुल दैट इस केस को आज तक माना जाता है. द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन is used to determine the constitutional validity of any amendment or act of the parliament. In simple words, the basic structure doctrine is a rule that states that certain provisions of constitution are so fundamental to the values, objective and soul of the constitution that they cannot be amended under any of the circumstances. And this case has given a constitution stability, it can be said that. अब इवन दो जो पिटिशनर था इस केस में दैट इज केशवानंद भारती वो पार्शियली अपना केस हार गया, but this case turned out to be the savior of Indian democracy and also prevented the constitution from losing its fundamental spirits of liberty, equality and justice. That's it for this video. I hope आपको ये केस समझ आ गया हो and now you know the judgment and the conclusion of the case and why this case is so important. Do visit Legal Vidya for any other queries. Thank you.